myself Anil Satwani. मैं Symbiotec Pharma Lab founder and managing director. We are a company based off Indore, Madhya Pradesh, Central India, and we are into steroid and hormones API global leadership. And this is an R&D-driven pharmaceutical and biotechnology platform. After achieving this success of the steroid hormone API, we want to repeat the success for a much larger addressable market segments. One the complex. Sir, in Hindi, he wants in Hindi. Hindi is okay? Hindi. हाँ, मैं कोशिश करूँगा. Introduction and मेरा नाम अनिल सतवानी. मैं मैनेजिंग डायरेक्टर फाउंडर सिम्बायोटिक फार्मा लैब लिमिटेड फ्रॉम इंदौर, मध्य प्रदेश. और हमने हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स API बिजनेस में एक ग्लोबल लीडरशिप को स्थापित किया है पिछले 20-25 सालों में. और हम एक R&D ड्रिवन फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है. और हमारे ईथोस में हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर और मैन्युफैक्चरिंग स्केल के ऊपर और जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है, इन तीनों चीज़ों को मिला के हमने ग्लोबल लीडरशिप को हासिल किया है पिछले 20 से 25 सालों में. और यही DNA हम सक्सेस का अगले नए कुछ वर्टिकल्स में डालना चाहते हैं, जहाँ हमने अपने APIs को अपने फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट किया है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल बोल रहे हैं. और एट द सेम टाइम हमारी जो साइंस, केमिस्ट्री और फर्मेंटेशन जिसके बुनियाद पर हमने ये व्यापार खड़ा किया है, उसमें से फर्मेंटेशन को हम आगे लेके जा रहे हैं. और जहाँ हमने बहुत बड़ी स्केल, जहाँ पे 1 लाख लीटर के सिंगल फर्मेंटर्स जैसी स्केल को स्थापित करके, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को स्थापित करके कुछ नए सेगमेंट्स में जा रहे हैं, जैसे हम बायोलॉजिक्स नाम से जानते हैं, जैसे हम बायो फार्मास्यूटिकल्स नाम से जानते हैं, और एक बायो मैन्युफैक्चरिंग नाम की जो नई दुनिया स्थापित होने लगी, जैसे हम बायो इकोनॉमी भी कह रहे हैं, और उसमें भी हमने एक एंट्री ली है. तो हमने 2 नए ग्रोथ इंजन्स को हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग और हमारे रेगुलेटरी कंप्लायंस को आगे ले जाते हुए, जहाँ हमने इंजेक्टेबल और हमने फर्मेंटेशन बेस्ड नए वर्टिकल्स को जन्म दिया है. और आने वाले कुछ ही सालों में ये अपने आप में बहुत बड़े बिजनेस वर्टिकल्स बन जाएंगे. और आज हमें बहुत गर्व है कि हमने हिंदुस्तान को सेल्फ रिलायंट बनाया है एक लाइफ सेविंग ड्रग्स में, जहाँ हमने कोविड में, जब आपने काफ़ी रेमडेसिविर और कुछ और इम्पोर्टेड ड्रग्स की शॉर्टेज के चलते काफ़ी हमें समस्याएं आई, लेकिन स्टीरॉयड जो हमारी फर्स्ट लाइन थेरेपी थी कोविड में, वहाँ पर किसी को इसकी शॉर्टेज महसूस नहीं हो पाई. और उसका कारण सिर्फ एक है कि सिम्बायोटिक रिलेंटलेसली 24/7 उन स्टीरॉयड ड्रग्स को, राइट फ्रॉम सोयाबीन डेराइव्ड स्टेरॉल जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं, थ्रू इट्स फर्मेंटेशन एंड केमिस्ट्री एक्सपर्टीज लगातार बनाए जा रहे थे. और उस वक्त शायद ऐसा लगा कि सिम्बायोटिक का जन्म ही शायद इस पेंडेमिक से अपने देश को बचाने के लिए हुआ. और हमने एक योद्धा की तरह लड़ते हुए पूरे हिंदुस्तान को उस सारे सालों में बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के लगातार प्रदान किए. तो बहुत गर्व है कि हमने लाइफ सेविंग ड्रग्स, स्टीरॉयड्स को, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया है, अपने देश की सेवा की, और नॉट ओनली अपने देश को और इंटरनेशनली हमने अपने आप को स्थापित किया. और इसी सक्सेस DNA को आगे बढ़ाते हुए हम इंजेक्टेबल और फर्मेंटेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स और CDMO में लेके जाना चाहते हैं. यही हमारा लक्ष्य है. Tell us about the IPO offering also. IPO ऑफरिंग्स हमने 1700 करोड़ रुपए का IPO का साइज़ है टोटल, जिसमें कुछ 150 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी अपने अंदर एज अ प्राइमरी इन्फ्यूजन ले रही है. और बाकी कुछ हमारे जो प्राइवेट एक्विटी इन्वेस्टर्स जिन्होंने कई सालों से, दशकों से हमारा साथ दिया है, उनकी एक पार्शियल एग्जिट भी इसके माध्यम से होने जा रही है. टोटल IPO साइजिंग 1700 करोड़ के आसपास. So what are your expectations from Gujarat? मैं आप सब लोगों को गुजरात भाई investment advisors and fellow book running lead managers to this IPO. I thank you for coming to this important milestone event of the company. Before we start, just to summarize the key issue details, the price band for the IPO is rupees 938 to rupees 988 per equity share of value rupees 2 each. The issue opens for subscription on August 24th, Monday, and closes on August 27th, Thursday. The issue is a combination of fresh issue of 150 crores and an offer of sale of about 1,607 crores. The market cap of the company at the top end of the price band would be about 6,350 crores. It is my pleasure to introduce the management team today to walk us through the opportunity and details of the company.
Please welcome Mr. Anil Sathwani, CEO and Managing Director and Promoter. Krishna Sathwani, Head of BD Injectables. Mr. Raghavendra Ramchandran, the Chief Financial Officer of the company. Shubham Sabu, General Manager Finance. And Mr. Kapil Mishra, Head of Strategy. Over to you. Yeah, namaste. Good morning. I'm Anil Sathwani, the founder and managing director at Symbiotec Pharma Lab. Thank you for hosting us here today. I'd like to give you context on Symbiotec Pharma Lab, our journey, what we have done in the past, and what we currently do, and what we intend to do in the future. Symbiotec essentially is an R&D-driven pharmaceutical and biotechnology company where we have achieved the global leadership in a niche space of steroids and hormones API. And we are working at the intersection of two sciences mainly, one the organic chemistry and two the biotech related fermentation technology. With the help of these two technological advancement, we have been able to achieve our global leadership in steroid hormones APIs. And of course, using the R&D and our technology strength, we now intend to create two different growth engines, one the forward integration side of complex injectables and two the fermentation based CDMO activities. So these are the two new growth engines that we'll also talk about. And needless to say that we have built very high quality and maintained very high quality manufacturing platforms with significant operational discipline, backed up by over 2 decades of regulatory compliance across all the regulatory authorities of the world. So regulatory compliance is the table stakes for this business. Before we talk about our future growth engines, let me just take a step back and give you context of how this business got into in existence and how we have moved from our initial days to where we are today. Of course, I'm a graduate in chemistry and postgraduate in economics and management, and I straight away dived into my own business back in '94, where I was brought an attention to a steroid molecule back then, which was an import product. And looking at sensing this import substitute possibility, I had an opportunity to team up with one of my mentors in chemistry, a PhD in organic chemistry, and we together over a period of almost 2 years kind of built a semi-novel chemistry to synthesize the steroid molecule and bring in a laboratory scale production of its kind, first time ever in India, a steroid molecule. All these steroids were imported back then from America, Europe and China. And we just took a step into this steroid manufacturing in '94, '95, and it all started with a Please allow me to walk you through our forward integration story and why we believe this is one of the most consequential decisions we've taken in the recent times. As Mr. Anil mentioned, as an API company, we've long been aware that we capture a very small percentage, right? It's around 2 to 5% of the total value of the medicines that we help create. And that led us to ask a very fundamental question, which was, how do we use our deep scientific expertise to move upstream and get a larger value share in the medicines that we help create? And when we look back, we said, we've been practicing 2 sciences which we've mastered over the last 2 decades. One being the sterile lyophilization science, and the other one being the sterility science. These are no ordinary capabilities, might I add. They have a very high barrier to entry, highly regulated, and form a foundation of what we've built today, which is a drug device capability in the form of dual chamber vials, which you see on the. Thank you, Anilji. As Anilji articulated very well, that as a company, Symbiotec has been profoundly developing and
using the expertise of complex biotech manufacturing for our own product portfolio, where we are at the intersection of chemistry and biotechnology. That's how you produce steroids and hormones. And while we have had US FDA approved plants and facilities and products for last almost 2 decades, we thought of strategically entering into offering this as a service to global players, Indian players, as